I will introduce to our panel. I am Vikrant, and this is Vishal Verma. He is from NPCIL, and he is Praveen. He is working in DRDO. So I would like to introduce yourself. Hello, sir. I am Karnajit Devnath. So I was born and brought up in Agartala, Tripura, in a hilly state of Northeast. So I did my schooling there from Netaji Subhash Vidyaniketan, and after that I joined NIT Agartala for mechanical engineering in 2012. So I passed out in 2016, and while passing out, I got a company placement in college. I got 3 placements, and I joined Ashok Leyland. So I worked there for 2.5 years, more than 2.5 years, almost like 3 years, and then I left Ashok Leyland and I started preparing for GATE in engineering service and DRDO and different kind of PSU exams. So, sir, after that I gave to GATE 2020, so in which I got rank of 1353. So for that my NPCIL interview is scheduled on 10th of August. So for that, sir, I am giving now the mock interview. Okay, great. Tell me your favorite subject. Sir, my favorite subjects are heat transfer, strength of materials, thermodynamics, fluid mechanics, and IC engine. So first of all, tell what are the different type of theories of failures? So there are several types of theories of failures. So first we can take as maximum principal stress theory. Second we can take as maximum principal strain theory. Then maximum principal strain theory. Then maximum shear stress theory. Then total strain energy theory, and then distortion energy theory. These are 5 kind of different theories of failure that we generally use for defining the failure criteria of a material. Tell me what is the physical significance of this distortion energy theory? So distortion energy theory is, sir, actually prior to that there is one more failure theory, which is total strain energy theory. So which it is said that whenever we apply any kind of force, then the body gets strained. And in the total strain, there will be two kind of strains. One will be to shear the body, another will be to deform the body. So the distortion energy will be the energy which will be stored in the body due to the deformation of the body. So the theory says that if the distortion energy in the body after application of force is more than the permissible amount of distortion energy, then the body will fail. So this is the physical significance as far as I have understood. I will give one case. So tell me whether you will go for static designing or dynamic design. Suppose there is one beam and this beam is connected to motor. Okay, motor. Huh? Yes, sir. Motor. Okay. And at the one end of this beam, let's say there is 10 kg load. So once you start the motor, then you can imagine the situation that what will happen. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Whether you will go for static design or dynamic design. No, sir. Let us take this as the beam. So I think you can see. So let us take this the beam, and this is the fixed point, which is like motor, and there is the load is being applied. So as the motor rotates, so the first point, if the load is being applied, then the top fiber will be in tension and the bottom fiber will be in compression. Whereas as the motor starts to rotate, the next point which will be in tension, and the opposite end of the opposite 180 degree opposite fiber will be in compression. So when the motor rotates, every point comes in tension and compression simultaneously. So I have to take here the dynamic design, sir. Dynamic design. Okay. So how you will design? So here I will take the case of fatigue design, sir. Fatigue loading. So I'll take the endurance limit of the, let it is given that the endurance limit of the material is given. So here I'll take the bending, because the body hello, sir. Hello. Yes, sir. Yes. So let us take this as the beam, and here at one end the body is being a load is being applied. So the body first, let us take this is the case of the static loading. Then the body gets bent. So here I'll take. So here I'll find the most critical point where the most amount of stress is being bending stress is applied. So from that, from that I'll find using the endurance stress and endurance limit criteria, I'll design the body, sir. Okay. In this case, what will be the mean stress? So mean stress will be 0. So mean stress will be 0. Okay.
And what will be the amplitude? Amplitude will be equal to the bending stress. Okay, okay. And suppose this is the material which is brittle. Okay. Yes, sir. Then which criteria you will use? So for brittle material, we will use the maximum principal stress theory. No, I am talking about under dynamic condition. Okay, there is two criteria for different for ductile material there is different, and for the brittle material there is different. That equation, which is in which you will use your ultimate stress, amplitude stress, mean stress. Which I am saying, what is the name of this equation? So for brittle material, we will use ultimate stress. I am talking about what is that criteria name? Criteria name. That equation name. Equation name. So I'm unable to understand what is being asked. Soderberg, that is. Okay. So the most conservative is Soderberg. So here I'll use Soderberg. Here I'll use Soderberg, sir. No, so not Soderberg, sir. Goodman theory. Why? So, but in Goodman theory, it is just the sigma m by S of ut plus sigma a by S by sigma e equal to less than equal to 1 by n. So here the mean stress is divided by sigma ultimate stress. So here, as it is here it is the case of brittle material. So I'll take the Goodman criteria. Okay. And what is n? N is the what is it said? So क्या बोलते हैं sir? Factor of safety. Factor of safety sir. थोड़ा सा घबरा गया sir अभी. कोई नहीं. Can you draw pump performance curve? Do you have pen and paper? Yes sir, I have pen and paper. This is from behind you. This is whiteboard or what? No sir, wall sir. Okay. Okay. Can you draw pump performance curve? Sir, performance curve अभी तो sir recently पढ़ा नहीं sir अभी थोड़ा. Okay. So how will you so आपने पंप के बारे में कुछ नहीं पढ़ा अभी तक? सर पंप पढ़ा है लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक्स कर वो सर जितना भी पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ तो सोचा सर लास्ट में पढ़ूंगा. Okay. So how will you design pump? Like what factor will you consider? Sir, first of all I'll need to see whether what height I need to deliver the fluid. So considering that I'll take the pump. What kind of pump I have to use? Okay. So I'll have to use what kind of whether it is a rotodynamic pump or it is a positive displacement pump. So depending on that, I'll take the first from pump criteria, and you take whether it is rotodynamic pump or that principle. Yeah. So suppose you are taking centrifugal, you have to design a centrifugal pump nowadays. Yes, sir. Centrifugal pump. So let us take from the ground level. I have to deliver the fluid to level H. So here I'll first of all I'll use the centrifugal pump at such a height that the inlet of the centrifugal pump, inlet head of the centrifugal pump does not go below the vapor pressure of the fluid, so that cavitation does not occur. So for that we will use NPSH criteria. So using that I'll design the pump, sir. Okay. What is cavitation? What is cavitation? Cavitation is like the criteria when, let us take a case of fluid is flowing through a pump, fluid is flowing through a pipe. So at a point, if the velocity of the fluid gets very high, then using the Bernoulli's theorem, we can say as the static head, as the height remains same, then the pressure will reduce. If the pressure reduces so much that the pressure goes below the vapor pressure of the fluid at that point, then the fluid will start to evaporate. Then fluid will start to boil. So then the fluid will vapor bubbles will be formed, and these vapor bubbles, along with the flow of the fluid, will be taken to a place where if the pressure is much higher than that, then the vapor bubbles will be collapsed, and that will create a turbulence in the fluid, which will affect the material of the pipe. So that is cavitation, sir.
Good, good. Okay. So there is one more term in pump that is priming. Do you know Yes, sir. Priming, yes, sir. what is that? Yes, actually, in a pump, the delivery head, the delivery head, एक सेकंड सर मैं थोड़ा सोच लेता हूँ सर क्या You can talk Okay, in okay. Hindi also. That there is no language boundary. आप हिंदी में बात कर सकते हो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो लैंग्वेज यूज कर सकते हो। सर मान लीजिए एक पंप में मेरे को एक सर्टेन हाइट तक फ्लूइड डिलीवरी करना है, तो फ्लूइड अगर डिलीवरी करना है एट दैट सर्टेन हाइट, सो अगर पहले मतलब स्टार्टिंग में अगर फ्लूइड में कोई पंप में कोई फ्लूइड नहीं होगा, तो वो डिलीवरी हाइट क्रिएट करने के लिए हमको कोई जो फ्लूइड उसमें से भेजना है उस फ्लूइड को उसमें डालना पड़ेगा। otherwise what will happen if the air will be there, then the head created by the pump will be very high. The head created by the pump will the head needed will be very high, which will not be actually there. So उसको कम करने के लिए हमको उसी फ्लूइड उसमें डालना पड़ेगा, तो उसको सर प्राइमिंग करना बोलते हैं। विदाउट प्राइमिंग द पंप विल नॉट स्टार्ट डिलीवरिंग फ्लूइड एट दैट वेरी हाइट। नहीं ये रीजन नहीं है, ये रीजन नहीं है। आप एक बार फिर से सोच के बताओगे, टू द पॉइंट सिंपल है, ज्यादा कुछ Simple है। इसमें लंबा कुछ नहीं है, सिंपल है, शॉर्ट है। सर प्राइमिंग मतलब क्या है सर? प्राइमिंग मतलब फ्लूइड को एक सर्टेन हाइट तक डिलीवरी करना है। सो अगर हमको सर्टेन हाइट तक फ्लूइड डिलीवरी करना है, तो वो सर्टेन हाइट मतलब सर्टेन हेड तक डिलीवरी करना है, तो वो सर्टेन हेड विल बी इक्वल टू द हाइट इन वो अगर एयर की कॉलम में देखेंगे तो उसका हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगा सर। नहीं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी आप आप चलो, टू कोई द नहीं। पॉइंट। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन बात नहीं। पूछिए, बाद में फीडबैक है तो आप बता तो ये थोड़ा दीजिए। देखना पड़ेगा सर, काफी मतलब थोड़ा सा मतलब हाँ, बोलने में ये थोड़ा जरूर हो रहा देख है। लीजिए। Sure, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स आप जैसे बोलेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स हम्म। मशीनरी, तो ये सब आ जाएंगे। जैसे आपसे नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ठीक है, और पंप का ऑपरेटिंग कर्व, परफॉर्मेंस कर्व, और ये पंप कैसे डिजाइन करते हैं, प्राइमिंग, कैविटेशंस, ये सब आपसे जरूर पूछेंगे, ठीक है। ये थोड़ा काफी दिनों से बाकी मतलब पढ़ा नहीं सर, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बोलने में, मतलब आ रहा है नहीं आ रहा है ऐसा हो रहा है दिमाग में। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स बताया था आपने क्या ये फेवरेट? सर थर्मोडायनामिक्स। तो व्हाट इज जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सर जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या है, अगर हमारे पास तीन बॉडी है, अगर A body is in thermal equilibrium with C body, and B body is separately in thermal equilibrium with B body, then we can say that body A is in thermal equilibrium with B body. So what is the physical significance of this law? सर इस लॉ से हमको कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर पता चलता है। तो पहले कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर कम्स, मतलब क्या है कि अगर ए बॉडी और बी बॉडी के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम इज डिसाइडेड ऑन व्हाट पैरामीटर, सो वी विल गेट दैट। तो ये थर्मल पैरामीटर, सो उसके लिए हमको सर टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आता है उसमें से। Okay, let me ask you the very basic question. What is temperature? टेम्परेचर अगर हम मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी उसमें से मतलब देखेंगे तो ये इट विल बी द काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सर्टेन बॉडीज। अगर मतलब It will be the average molecular kinetic energy possessed by the molecule inside a body. Okay, so okay sir, average, okay sir. So average, that term you have must have been in sure your sir, mind, sure na? sir, sure. Okay, so tell me about entropy. What is entropy? Entropy is the disorderedness in a body which and इतना ही बोल सकते हैं सर। entropy is the disorderedness of a body। ये अगर किसी बाहर की किसी सिस्टम या फिर कोई सराउंडिंग्स के साथ हीट ट्रांसफर मतलब हीट इंटरेक्शन करेगा, तो उसमें से सर्टेन अमाउंट ऑफ डिसऑर्डरनेस आएगी अगर द प्रोसेस इज नॉट रिवर्सिबल। अगर द प्रोसेस इज नॉट नो सर, रिवर्सिबल की बात ही नहीं है, सॉरी सर इसमें। अच्छा, ओके, व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस? सर रिवर्सिबल प्रोसेस इज दैट प्रोसेस, अगर स्टेट पॉइंट हम अगर कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम में अगर कोई बॉडी स्टेट पॉइंट 1 से स्टेट पॉइंट 2 तक जा रहा है, तो ये एंड इफ इसको 2 पॉइंट से 1 पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो इसका अगर बाहरी किसी सराउंडिंग में कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, ये प्रोसेस अगर 1 to 2 से जाएंगे फिर 2 से 1 जाएंगे, देन द प्रोसेस विल बी सर रिवर्सिबल प्रोसेस। So what will be the entropy change with this reversible process? सर रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी एक्चुअली एक स्टेट फंक्शन है सर। तो रिवर्सिबल चेंज विल बी द entropy change will be the entropy at the final point minus entropy at the starting point, reversible process में।
So there would be an entropy or not associated with reversible process? Sorry, sir. Would there be any entropy associated with reversible process or not? Yes, sir. Entropy will be obviously. And what will be entropy generation in reversible process? तो रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी जनरेशन नहीं होगा सर. एंट्रोपी जनरेशन तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में होता है. अच्छा, क्यों नहीं होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी जनरेशन? सर रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी जनरेशन, सर एंट्रोपी जनरेशन मान लीजिए अगर क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड from a thermal reservoir A, T1, thermal reservoir A, which is at temperature T1, to thermal reservoir B, which is at T2. तो अगर रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर होगा, तो रिवर्सिबल अगर हीट ट्रांसफर होगा तो क्या होगा सर, ए रिजर्वेयर से जो हीट निकलेगा, मान लीजिए क्यू अमाउंट ऑफ हीट निकलता है, तो उसका जो एंट्रोपी चेंज होगा दैट विल बी माइनस क्यू बाई T1 एंड क्यू बाई T, एंड फॉर द बी बॉडी इट विल बी the same amount of heat it takes. So इसके लिए सर एंट्रोपी होगा, एंट्रोपी मतलब एंट्रोपी बढ़ेगा कितना, प्लस क्यू बाई टी. तो सम ऑफ दैट विल बी जीरो. बट इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, That can also प्रोसेस में, yes sir. Okay, so Yes, sir. why is entropy being generated? Entropy generate होता ही क्यों? एंट्रोपी जनरेशन होता है इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी की वजह से. एक्सटर्नल irreversibility की वजह से नहीं होता क्या? एक्सटर्नल के लिए भी हो सकता है सर, एक्सटर्नल के लिए भी हो सकता है. मतलब इरिवर्सिबिलिटी के लिए इरिवर्सिबिलिटी की वजह से सर एंट्रोपी जनरेशन होगा. Okay, so do you know about law of hydrostatics? सर कौन सा लॉ सर? Law of hydrostatics in fluid mechanics. यस सर, लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स. सर Okay, what is पास्कल्स it? लॉ के बारे में बोल रहे हैं क्या सर? नहीं, law of पास्कल्स hydrostatics. लॉ इज द No, law of hydrostatics. लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स. Yeah. Pascal's law is something different. लॉ ऑफ No? हाइड्रोस्टैटिक्स सर. Okay, go ahead. Pascal's sorry. So law of hydrostatics states that rate of change of pressure with respect to height will be equal to the negative of rho into g. You can say specific weight, no? Specific weight, yes sir, specific weight. Okay. So this is for the fluid at static condition, na? Fluid at Static, yes sir, fluid at static. This is varied only then. So have you done the analysis of venturimeter? Yes sir, venturimeter. That's right. So in venturimeter derivation we use this law of hydrostatics there. Okay, can you remember that? Are you getting my point? What I am trying to say? सर वेंचुरीमीटर में तो सर हम फ्लूइड वेंचुरीमीटर में निकालते हैं. वेंचुरीमीटर फ्लो रेट निकालते हैं, लेकिन वेंचुरीमीटर में मैनोमीटर कनेक्टेड होता है थ्रोट पे और इनलेट पाइप पे. ठीक है, यस सर. उसमें हम लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स का यूज करते हैं ना. हाँ सर, यूज करते हैं सर. लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स का यूज वेंचुरीमीटर में करते हैं, लेकिन लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स तो वैलिड है जब फ्लूइड एट रेस्ट पे होता है ना. यस सर. यस सर. वेंचुरीमीटर में हम लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स का यूज कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें तो फ्लूइड फ्लोइंग सर. बट सर जो कॉलम रहेंगे, जो मैनोमीटर के कॉलम रहेंगे, उसमें तो सर फ्लूइड स्टैटिक रहेंगे. मैनोमीटर के कॉलम फ्लूइड स्टैटिक. ओके, आई गॉट दैट पॉइंट, बट द पॉइंट एट व्हिच these manometer pipes are connected are at the throat and at point 1, that is the inlet of the pipe. Okay. Yes sir. So Yes, but sir, yes, sir. there the fluid is flowing, na? Yes sir, centrally within the main pipe fluid will be flowing. So how are we using that fluid static condition in that fluid dynamics? सर हम तो यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं. The total energy at that point will be equal. We are equating the total energy at the 2 points. So not only this hydrostatic law. तो total Hydrostatic लगाएंगे तो उसमें, हाँ सर बोलिए. चलो ठीक है, कोई बात. आप बर्नौली इक्वेशन लिख सकते हो. Yes sir. So Bernoulli equation will be pressure head plus kinetic head plus datum head. The summation will be constant sir. आपने पावर प्लांट पढ़े हैं? पावर प्लांट. हाँ, पावर प्लांट सर पढ़ा तो है सर. ओके. तो गैस पावर प्लांट और स्टीम पावर प्लांट में कौन सा साइकिल यूज करते हैं? सर गैस पावर प्लांट ब्रेटन साइकिल से चलता है, और स्टीम पावर प्लांट चलता है सर रैंकिन साइकिल से. ओके. आप के पास पेन पेपर हो तो आप ड्रॉ कर सकते हैं दोनों का साइकिल. हाँ सर टीएस ड्रॉ कर रहा हूँ सर. हाँ टीएस डायग्राम. हाँ ओके. सो फर्स्ट आई थिंक गैस पावर. सर ये वाला गैस पावर प्लांट है. ओके. तो दूसरा वाला सेकंड वन है सेकंड वाला रैंकिन. So do you heard term regeneration
reheating, superheating terms. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. what is that? सर रीजनरेशन मतलब मैं गैस गैस पावर प्लांट से बोलता हूँ सर। रीजनरेशन रीजनरेशन नहीं, रीहीट मतलब रीजनरेशन बोलता हूँ सर। एक्चुअली क्या है, मान लीजिए अगर जो हमारा जो टरबाइन के बाद जो 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 गैस निकलता है, दैट विल बी कंटेनिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसको हम अगर मान लीजिए ओपन साइकिल गैस टरबाइन है, तो वो हम उसको हवा में फेंक रहे हैं, तो ये हमारा जो एनर्जी है वो मतलब वेस्ट हो रहा है, जाया हो रहा है। तो उसको हम यूज करके जो कंबशन होता है, कंबशन प्रोसेस होता है, कंबशन प्रोसेस में अगर वो हीट हम यूज कर लें थ्रू ए हीट एक्सचेंजर, देन कंबशन प्रोसेस में हमको एक्चुअल हीट दैट हैज टू बी ट्रांसफर्ड विल बी रिड्यूस्ड। Okay. सो ये है गैस टरबाइन में, मतलब सॉरी गैस पावर प्लांट में। और दूसरा रैंकिन में भी वही होता है। रैंकिन में टरबाइन से एक्चुअली टरबाइन से हम बीच में से एक पॉइंट से थोड़ा सा वो ले लेते हैं, ब्लीड Bleed. करते हैं। तो वो करके हम उसको मतलब उसको फिर क्या बोलते, पंप के बाद फिर में बॉयलर से पहले उसको अटैच कर देते हैं उस लाइन को, जैसे सर रीजनरेशन Okay. कर लेते हैं सर। तो आप रैंकाइन साइकिल में रीहीटिंग रीजनरेशन आप ड्रॉ कर सकते हो? हाँ सर, कर सकते सर। रैंकिन साइकिल में रीहीटिंग करते हैं हम प्रायर टरबाइन के बाद। ओके, सो ये आपका हो गया रीहीटिंग रीहीटिंग हो एंड गया सर। रीजन। हाँ, आप रीजनरेशन इसमें क्लब कर सकते हो आप। रीजनरेशन इसमें से कर सकते हैं सर। ओपन रीहीटिंग फीड प्लस ये सर रीहीटिंग बोलिए प्लस सर। रीजनरेशन दोनों एक ही ग्राफ में आप क्लब कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं सर। because that is the actual cycle that is used in practically in power plant. पॉइंट का नाम नहीं दिया, लेकिन मतलब ठीक रहेगा सर। ये पॉइंट सर मतलब गलत ड्रॉ कर दिया, हाँ, इसको काट ओके दिया ओके सर। ओके ये ओपन फीड किया सर। ओके। दैट्स इनफ। सपोज ये बोतल है, ठीक है। हाँ सर। आप मैंने इसके बॉटम में होल कर दिया है, ठीक है। हाँ सर। और ये कम्प्लीटली स्टार्टिंग में फ्लूइड से भरा हुआ था, ठीक है। ओके सर। ओके, सो इसका डिस्चार्ज वर्सेस टाइम आप ग्राफ ड्रा कर सकते हो क्या? सर ऊपर में ये लीड बंद है कि लीड खुला है सर? नहीं नहीं, ये क्लोज है, कम्प्लीटली कम्प्लीटली क्लोज। एक ये है, ठीक है। अब इसके नीचे जो है बॉटम में एक होल कर दो, ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ से पानी नीचे जाएगा, निकलेगा। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो जो ये डिस्चार्ज हो उसका वर्सेस टाइम का ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो। यस सर, यस। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो आप। नहीं सर, कर रहा हूँ सर इसमें। सर अगर ये मेरा एक ये क्वेश्चन है, अगर ये ऊपर से बंद रहेगा तो ये हवा निकलने के लिए ऊपर से तो ये वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा ना, तो हवा तो निकलेगा नहीं सर। लेकिन ऊपर तो खुला होना चाहिए ना लीड, तभी निकलेगा सर। ओके, आप वेंट कर दो, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, ये पूरा भरा हुआ है। हाँ ठीक है, ठीक है सर। ये सही है क्या सर? पैराबोलिक होगा? ओके, पैराबोलिक होगा, यस यस। ठीक है, मेरे एंड से तो हो गया। सो आपका तो बेसिक स्ट्रांग है आई थिंक। बाकी आप बीच में हड़बड़ा गए थे आई थिंक, मतलब सर ये ठीक मेरे है। साथ पहले भी हुआ था, पहले इंटरव्यू में भी सर, पहले जो इंटरव्यू बैठा था उसमें भी सर ऐसा ही हुआ था। तो मतलब मैं बीच में ये हो जाता है सर मेरे से, तो मतलब दिक्कत हो जाता है सर। तो आप इस पे आप थोड़ा सा वर्क कीजिए, ठीक है। तो बाकी आपका बेसिक स्ट्रांग है। बाकी आप जो भी मतलब सब्जेक्ट चूज करके जाते हो, आपको वहां पे जाते ही आप 5 सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आपसे राइट डाउन करवा लेंगे कि हाँ आप 5 सब्जेक्ट लिख दो, कौन कौन सा। तो उसके जो बेसिक्स हैं, जैसे आपने फ्लूइड मैकेनिक्स या मशीनरी के हो गए, पंप से रिलेटेड, या फिर HMT हो गया, और फिर आईसी इंजन, आप कौन कौन सा सब्जेक्ट, तो उसके जो भी है बेसिक, ठीक है। आपने थर्मोडायनेमिक फर्स्ट सेकंड थर्ड ला, एंट्रोपी वगैरह जैसे हो गया, ठीक है। या फिर पावर प्लांट में आपसे पावर प्लांट ना चाहते हुए भी आपसे पूछ लेंगे, तो पावर प्लांट जरूर पढ़ के जाइएगा। गैस साइकिल, रैंकाइन साइकिल, रीजनरेशन, रीहीटिंग, पंप में प्राइमिंग, ठीक है। थोड़ा देखना पड़ेगा। बाकी आपका बेसिक तो ठीक है। सर एक मेरा क्वेश्चन था सर, एक्चुअली मेरा तो सर एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है सर ऑटोमोबाइल में। तो मेरे को सर क्या उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे क्या? हाँ 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 हाँ। फिर आप आईसी इंजन थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल इन प्रैक्टिकल वे, ठीक है। और आपसे ये जरूर क्वेश्चन पुट अप होगा कि अगर व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एनपीसीआईएल, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक जॉब था, आपने वो जॉब
एक तो छोड़ा क्यों, फिर आप NPCIL ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपके पास जरूर आएगा ये क्वेश्चन। वैसे NPC में HR रिलेटेड क्वेश्चन पूछते नहीं है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपसे जरूर ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ठीक है तैयार कर, मतलब प्रिपेयर कर लूंगा इसके अच्छे से। ओके, सो वैसे तो विशाल ने वैसे काफी कुछ बता ही दिया है, ठीक है। तो मैं जस्ट यही बोलूंगा कि आप वो बीच में जो आप क्या हो रहा है कि जब आंसर बता रहे हो तो वही रिपीट कर रहे हो बार बार, मतलब ऐसा अच्छा हुआ था। हाँ, जैसे वर्ड्स को बार बार रिपीट करना तो थोड़ा सा मतलब उतना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। ठीक है तो सर, आप एक काम कर सकते हैं, आप ना थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, उसमें कोई ये कोई बहुत बड़ी नहीं है। आप क्या करो, 2-3 बार अपने फ्रेंड्स के साथ या कुछ भी है उनसे बोलो कि आप आपसे क्वेश्चन पूछे और आप उनको थोड़ा सही से आंसर दो, ठीक है। आपको चीजें पता है, नॉलेज आपको है, लेकिन कैसा है थोड़ा सा मतलब हड़बड़ी में कुछ तो मतलब थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हो, थोड़ा फटाफट बोल रहे हो। आप आराम से बोलो, रिलैक्स होकर बोलो, ठीक है सर। इसमें ऐसा कुछ ठीक है। टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके पास नॉलेज अच्छा है, आपका कंसेप्ट भी क्लियर है, ओवरऑल सब कुछ आपका क्लियर है, समझ लो। और आपका सिलेक्शन होने का काफी अच्छा चांस है, ठीक है। ठीक है, खाली ये जस्ट थोड़े बहुत जो आपको पॉइंट्स बताए गए हैं आप उस पर काम करो। और दूसरा चीज जो वर्क एक्सपीरियंस का जो विशाल ने भी बताया आपको, थोड़ा सा देख लो आपका क्या प्रोफाइल था और उससे रिलेटेड, क्योंकि पूछ सकते हैं कि मतलब आपकी प्रोफाइल क्या थी, आप वहां पे क्या करते थे, तो वो आप देख लो। और ठीक है, और ओवरऑल तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, कंसेप्ट भी काफी अच्छे हैं। सर एक चीज, कॉलेज प्रोजेक्ट ये सब तैयार है? हाँ, सर कॉलेज प्रोजेक्ट आप देख लो, यस एटलीस्ट बेसिक पढ़ लो कि हाँ, कॉलेज प्रोजेक्ट मस्ट है। मुझसे कॉलेज प्रोजेक्ट से भी मतलब क्वेश्चंस पुट अप हुए थे NPCIL के इंटरव्यू में, ठीक है। तो कॉलेज प्रोजेक्ट जरूर, कोई भी इंटरव्यूअर कोई पूछ सकता है आपसे, इवन NPC में नहीं, आप कोई और भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो ठीक है। ठीक है, ओवरऑल काफी अच्छा रहा, तो बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको इसके अलावा और भी किसी तरह का हेल्प चाहिए रहेगा, कोई भी डाउट रहेगा, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो या इधर टेलीग्राम के थ्रू भी आप पूछ सकते हो। ठीक है श्योर सर। बेस्ट ऑफ लक, बाय। थैंक यू सर, इस हेल्प के लिए थैंक यू सर।